Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Muhammad Ismail, and I will discuss the chemistry part of this test. Today we are going to discuss the test number 6. So look at question number 4. The correct order of basicity of amines in gas phase is, you know that the amines are of 3 types. We have primary amines, we have secondary amines, this is question number 4, and we have tertiary amines. In primary amine, you have 2 hydrogen atom attached to nitrogen, and secondary amine you have only 1 hydrogen, and tertiary amine you have no hydrogen attached to the nitrogen. Now we will later on discuss that these 2 amine, as they possess hydrogen atoms, so they can take part in hydrogen bonding, but tertiary amine do not take part in hydrogen bonding. Now the basicity of amines in gas phase is tertiary are more basic than secondary, and secondary are more basic than primary. What is the reason? देखिए, अगर आप के पास एक एमाइन हो और आप इसके साथ कोई एसिड मिलाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके साथ वाटर मिलाता हूँ, तो हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफ़र होगा and you will get this positive ion and plus hydroxide ion. Now look at the secondary amine. We are going to react it with water. Now hydrogen transfer here, and a positive charge will appear on this nitrogen. You are left with a hydroxide ion. तो ये जो पॉजिटिव हमारे साथ जो कंजुगेट इसका एसिड बना है, तो ये कंजुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना आपका जो एमाइन है वो ज़्यादा अल्कलाइन होगा, ज़्यादा बेसिक होगा. आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, ये पार्शली ये न्यूट्रलाइज होता है, and it makes this alkyl group makes this nitrogen positive stable. यहाँ पर अगर आप देखें तो there are 2 alkyl groups which are donating the electron to nitrogen. तो इसकी stabilization जो है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके. That's why secondary amine are more basic as compared to the primary amine. अगर आप tertiary amine लेते हैं और इसके साथ आप वाटर मिलाते हैं, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर आके इसके साथ अटैच होगा and you will get a positive charge and hydroxide ion. अब यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो इस नाइट्रोजन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. So the 3 alkyl group makes this conjugate acid more stable as compared to this. This is more stable than this. So वो बेस ज़्यादा stronger बेस होता है जिसका conjugate acid ज़्यादा stable होता है. चुनांचे इसका conjugate बेस ज़्यादा stable है, and that's why the tertiary amines they are more basic. अलबत्ता अगर आप एक्वियस मीडियम में देखें तो फिर वहाँ पर वाटर और ये जो पॉजिटिव आयन बने हैं तो उनके इंटरेक्शन पर भी बेसिसिटी डिपेंड करती है. मिसाल के तौर पर अगर आप एक्वियस सोल्यूशन में इफ़ यू मेक एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एन एमाइन, तो आप देखेंगे कि CH3NCH3
and H secondary amine, that is then more basic as compared to the primary amine, and the primary amine is more basic than the tertiary amine. So this is in the aqueous solution. The basicity of amine is altered in aqueous medium because of the solvation effect. The reason is that the positively charged ion or the conjugate acid of this amine is easily hydrated because there are two alkyl groups, so they stabilize more the conjugate acid of this amine, and it is more basic. But if you compare the basicity of these two amines, so this is more basic than this one. The reason is that it is smaller alkyl group. Here the nitrogen is surrounded by 3 alkyl group. तो इसकी हाइड्रेशन जो है ये आसानी से हो सकती है, और इसकी हाइड्रेशन का जो कंजुगेट एसिड बनेगा इसकी हाइड्रेशन आसानी से नहीं होती है. So the basicity of the amine depends that whether it is in the form of solution or it is in gas phase. So we summarize the discussion that basicity of amine in gas phase is follow the order that tertiary amine are more basic than secondary and secondary are more basic than primary. But in case of aqueous solution, secondary amine are more basic than primary and primary are more basic than tertiary. टर्शरी इमाइन की बेसिसिटी कम इस वजह से है कि इनसे जो कंजुगेट एसिड बनता है तो पानी के मालिक्यूल उसको सराउंड नहीं कर सकते हैं आसानी की वजह से, ड्यू टू 3 अल्काइल ग्रुप्स, ड्यू टू स्टीरिक हाइंड्रेंस. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ethyl alcohol and propyl alcohol. तो इसमें ये रूल याद रखें कि जो अल्कोहल among the एलिफेटिक अल्कोहल जो स्मॉलर अल्कोहल होगा, so that will be more acidic as compared to the larger alcohol. उसकी वजह ये है कि इसकी साल्वेशन जो है आसानी से हो सकती है. जितना अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा तो उसकी पोलरिटी कम होगी, उसका साल्वेशन मुश्किल से होता है. चुनांचे इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, और इसकी वजह ये है कि स्मॉलर अल्कोहल जो हैं दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द लार्जर अल्कोहल. ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखें ये इस वजह से गलत है कि फिनोल जो होता है इसकी एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा होती है, तो सी और डी ऑप्शन गलत है. बी ऑप्शन ए ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इथाइल अल्कोहल की एसिडिटी प्रोपाइल अल्कोहल से कम है. इस तरह नहीं होता, बल्कि इथाइल अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द प्रोपाइल अल्कोहल. हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन बॉन्ड किस कंपाउंड में मौजूद नहीं होते हैं. नंबर 6, आपको पता है कि इमाइंस में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, सो दे कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस हाइड्रोजन कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड. आप अगर नाइट्राइल देखें तो नाइट्राइल के मॉलिक्यूल में इट हैज़ नो हाइड्रोजन एटम, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा. और टर्शरी इमाइन अगर आप देखें तो टर्शरी इमाइन में भी देयर इज़ नो हाइड्रोजन, देयर इज़ नो हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन एटम, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता. इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, डी ऑप्शन वो करेक्ट है कि न तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं और न टर्शरी इमाइन में. क्वेश्चन नंबर 11,
The correct order of stability of carbonium ion, नंबर 11। आप देखें टर्शरी कार्बोनियम आयन में कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, जबकि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, और प्राइमरी कार्बोनियम आयन में ओनली 1 अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम। आपको मैंने बताया था कि अल्काइल ग्रुप जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देकर उसको स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप इसकी स्टेबलाइजेशन करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 अल्काइल ग्रुप इसको स्टेबल बनाता है। चुनांचे 3 अल्काइल ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 2 अल्काइल ग्रुप, और 2 का इफेक्ट ज़्यादा होता है 1 अल्काइल ग्रुप के मुकाबले में। दैट्स वाई द टर्शरी कार्बोनियम आयन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी। इसमें एक पॉइंट आप ये भी याद रखें कि अगर कार्बेनाइन की बात हो रही हो, कार्बेनाइन का मतलब होता है अ कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। So let's suppose we have this one, this is tertiary carbanion, this is secondary carbanion, and this one is primary carbanion। तो यहाँ पर जो order of stability है, stability order, तो ये उल्टा हो जाता है। In case of positive ions, tertiary carbonium ion is more stable than secondary. Secondary is more stable than primary. But in case of carbanion, when carbon has negative charge, the order of stability is reversed. And this one, primary carbanion is more stable than secondary, and secondary is more stable than tertiary. Similarly, if you have, let's suppose we have a free radical. This is tertiary free radical. Similarly, we have a secondary free radical and we have a primary free radical. So the order of stability of the free radicals is this follows the same order as like the order of the carbonium ion. The stability of carbonium ion and free radical, that resemble to each other. As tertiary carbonium ion is stable, similarly tertiary free radical is also more stable. और आपको पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, आपसे अगर कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो बज़ाहिर हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, लेकिन this carbon lacks 1 electron, it is electron deficient. यहाँ पर 2 electron, 2 over 2, there are 6 and 1 7, so there are 7 electron in the free radical. इसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन कम है, चुनांचे it is an electron deficient. ये भी electron deficient species हैं, लेकिन ये electron rich species हैं। तो जो कार्बोनियम आयन या फ्री रेडिकल होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और जो टर्शरी कार्बोनियम आयन और फ्री रेडिकल होते हैं, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी आर मोर स्टेबल टू द प्राइमरी. In case of carbanion, primary carbanion are more stable. Question number 12. आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें. Which one is heterocyclic? तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होता है जिसमें बेंजीन रिंग के अंदर कोई हेट्रो एटम मौजूद हो, या नाइट्रोजन या सल्फर या फास्फोरस या ऑक्सीजन. अगर रिंग से बाहर, फॉर एग्जांपल ये रिंग है, रिंग में हेट्रो एटम नहीं है, बाहर कहीं पर हेट्रो एटम अटैच है, तो इट इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक. या फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड अगर आप देखें, यहाँ पर हेट्रो एटम है लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर नहीं है, तो इट विल नॉट बी हेट्रोसाइक्लिक. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. नन ऑफ दीज इज
heterocyclic because none of these contain a heteroatom in the ring. Next जो है the order of nucleophilicity of halide ion, question number 13 है nucleophilicity. तो आप देखें nucleophilicity is the ability of an atom to donate its electron pair. जो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो that will be a good nucleophile. और आयोडाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है? इसकी वजह यह कि इसका साइज़ बड़ा होता है और फ्लोराइड इज स्मॉलर इन साइज, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ज़्यादा टाइटली बाइंड करता है और आयोडाइड जो है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज़ लूजली बाउंड. दैट्स वाई आयोडाइड इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल. इट कैन डोनेट्स इट इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज. दूसरा रीज़न जो है सिमिलरली द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड एंड द वीकेस्ट वन इज़ फ्लोराइड. दूसरा रीज़न ये है कि जब हम इसको पानी की मौजूदगी में लेते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट उस सॉल्वेंट को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो. तो आयोडाइड जो है इसका चूँकि साइज़ बड़ा होता है इसकी वजह से इसके गिर्द पानी के थोड़े मालिक्यूल इसको सराउंड कर सकते हैं, जबकि फ्लोराइड का साइज़ छोटा होता है. इस वजह से वाटर के ज़्यादा मालिक्यूल जो हैं और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मोर वाटर विल बी अटैच टू द फ्लोराइड. किस वजह से? ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स. यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स फ्लोरीन के साइज़ कम होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन बहुत होता है बिकॉज द चार्ज इज़ लोकलाइज. यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है. असल में चार्ज डेंसिटी जो है इट इज़ इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ द आयन. तो जितना साइज़ ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी कम होगी, जितना साइज़ कम होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी. सो ग्रेटर इज़ द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर इज़ द attraction of the charged species with water molecules. So that's why the fluoride is more stabilized by water. That is, water strongly interacts with the fluoride ion as compared to bromide and chloride and iodide. Due to the smaller charge density of iodide, the attractive forces between water and iodide are weak. So iodide is not very stable. So smaller is the stability, higher is the nucleophilicity. That's why the iodide is a good nucleophile and the protic solvent. लेकिन अगर aprotic solvent आप लेते हैं तो in case of aprotic solvent the nucleophilicity order is then reversed. Our bromide जो है fluoride will be the strongest nucleophile while the iodide that will be the weakest nucleophile. So the nucleophilicity depends on the size and also depends on the charge, also depends on its interaction with the solvent, interaction with water or any other solvent. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 में है मिक्स्ड ईथर. तो मिक्स्ड ईथर जो है उसमें वी हैव वन अल्काइल ग्रुप ऑन वन साइड ऑफ ऑक्सीजन एंड वन अल्काइल ऑन द अदर साइड, बट दीज टू अल्काइल ग्रुप्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. अगर दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे हों तो फिर उसको सिंपल ईथर कहते हैं, ROR. दिस इज द फार्मूला ऑफ सिंपल ईथर.
तो आप देखें अगर एक तरफ मीथाइल हो और दूसरी तरफ फिनाइल ग्रुप हो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर. So methyl phenyl ether is the correct option. This is a mixed ether because two alkyl groups are different from one another. Question number 25. Which one of the following is an aromatic alcohol? ऐसा अल्कोहल जिसमें बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो, that is called phenol. लेकिन अगर OH is attached to a side chain, then it is called aromatic alcohol. तो इसमें अगर आप देखें ये जो कंपाउंड है, दिस इज CH2COH, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल, एंड दिस वन, दिस इज CH3 एंड CH2OH, दिस इज methyl benzyl alcohol. So these two are actually alcohol and also they are aromatic. Such alcohol are called aromatic alcohol. So the correct option is option number D. इसका मतलब ये है कि B and C both options are correct. This is also aromatic alcohol, this is also aromatic alcohol. Option number A, it is aromatic compound, it is not an aromatic alcohol. Question number 26. हीलियम जो है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है 1 डेसीमीटर क्यूब पर आवर. Rate of diffusion of helium is 1 decimeter cube per hour. What will be the rate of effusion of methane? तो आप देखें मीथेन जो है इसका मोलर मास 16 है, हीलियम का मोलर मास 4 है. ये लाइटर गैस है एंड दिस इज हेवियर गैस. तो हेवियर गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट विल बी लेस देन द लाइटर गैस. इस वजह से आप जो जवाब ढूंढते हैं उसमें आपने 1 से कम जवाब ढूंढना है. तो आप देखें आपके साथ जो आंसर है उसमें एक 8 है, एक 2 है, एक 4 है. ये सारे जो है 1 डेसीमीटर क्यूब पर आवर से ज़्यादा है. तो जो छोटा जवाब है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज़ 0.5 डेसीमीटर क्यूब पर आवर. दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 34. विस्कोसिटी ऑफ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है इन सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज़ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड. दिस इज SI यूनिट. और इसका CGS यूनिट जो है दैट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पाज. इसको पाज कहते हैं. और 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 पाज. इसको लिखा जाता है पाइज, लेकिन इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं पाज. क्वेश्चन नंबर 35. विच अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन विद ईज. तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, order of dehydration of alcohol is tertiary alcohol easily dehydrate than secondary, and secondary alcohol dehydrate easily than primary alcohol. So the correct order is this one. Now look which one is the tertiary alcohol. So option number C, that is 2-methyl, this is methyl group, 2-methyl and 2-propanol. This is 1, 2, 3. Now this carbon is tertiary carbon because it is attached to 3 carbon atom. This is an example of tertiary alcohol. Tertiary alcohol will easily dehydrate because they involve the formation of tertiary carbonium ion, which is more stable as compared to the secondary and primary carbonium ions. Question number 36. ये हमारे पास एक आयन है I3-1 आयन. आप देखें इसमें आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन इसने जब शेयर किया है तो ये 7 + 1 इलेक्ट्रॉन हो गए. एक इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन ने शेयर किया है तो इलेक्ट्रॉन 7 + 1 + 1, और एक इस पर नेगेटिव चार्ज है. सो टोटल इलेक्ट्रॉन विद द सेंट्रल आयोडीन इज 10. इसके साथ दो जो
दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 3 जो हैं so they are lone pair. So the central iodine is attached to 5 electron pairs. 2 are bonded and 3 are lone pairs. Total number of electron pairs जो हैं total electron pairs with the central iodine is equal to 5. Now the hybridization of the central iodine is dsp3. And how these electron pairs are arranged? So the 3 lone pairs arrange themselves around the iodine atom at equatorial position. These positions are called equatorial positions. This iodine makes a bond here and this iodine makes a bond downward. And the 3 electron pairs, they occupy the equatorial position. The 2 iodine atom, one above and one below, they are called axial iodine atoms. So the geometry of the electron pair is trigonal bipyramidal. But the shape of the ion, that is straight. So this is a linear ion. I3 minus 1 ion has a linear shape. Question number 47. Sodium acetylide form acetylene when treated with. आप देखें we have question number 47. Sodium acetylide. This is the formula of sodium acetylide. You know that acetylide ion is a very strong base. ये इतना strong base है कि even अगर आप इसके साथ water मिलाते हैं, so it will react with water and it will produce acetylene gas. यानी ये हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में this is a stronger base. Acetylide ion is a stronger base as compared to the hydroxide. तो वाटर से ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके एसिटाइलिन बनाएगा. चूँकि वाटर भी इसको हाइड्रोजन दे सकता है तो एसिटिक एसिड और HCl वो तो वाटर के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर एसिड हैं, तो वो भी एसिटाइलाइड को हाइड्रोजन दे सकते हैं. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 47 में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. उसकी वजह यह है कि वाटर, एसिटिक एसिड और HCl ये तीनों जो हैं ये एसिटाइलिन के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर एसिड हैं. सो अ स्ट्रॉन्गर एसिड will make a weaker acid. So when we combine sodium acetylide with HCl or water or acetic acid, we get the acetylene. Question number 48. Which one of the following statement is correct about the following reversible reaction carried out in an open container? So this is an example of heterogeneous equilibrium. You see that calcium carbonate and calcium oxide are solid, but carbon dioxide is a gas. Look, whenever you have gases in a system, such a system will attain equilibrium only when the system is closed. If you have an open container, no equilibrium will establish. So the correct option in this question is D. The system will not attain equilibrium, because in case of gases, the necessary criterion for the equilibrium is a closed container. Question number 49. 3 molecules of acetylene, they combine to make what? Actually they form benzene. This is the formula of benzene is C6H6. 3 molecules of acetylene combine. This is the mechanism of the reaction. This bond breaks here, this bond breaks, this bond breaks. Now 3 bonds are broken down and 3
bonds, new bonds, they are actually formed in this process. Now, when two or more molecules combine and make a single molecule, the process is called polymerization. In case of benzene, 3 molecules of acetylene combine, so it is trimerization. And benzene is called trimer of acetylene. It is a trimer of acetylene. The catalyst used for this reaction is copper, and the temperature required is 300 degrees centigrade. So this is an example of cyclic polymerization, and we get benzene. So option number C is correct. Option number C is correct. Question number 54. Which one of the following has highest lattice energy? Lattice energy is defined as the energy required to convert 1 mole of a solid into its ions. The energy required to separate the positive and negative ions from one another is known as lattice energy. Now, for ionic compound, the lattice energy is directly proportional to charge on positive ion multiplied by charge on negative ion divided by charge radius of the positive ion and plus radius of the negative ion. So lattice energy is inversely related to the radii. Bigger are the radii, lower is the lattice energy. Smaller are the ions, greater is the lattice energy. Similarly, increase of Q1 and Q2 will increase the lattice energy. Now, if you look at the NaCl, we have +1 charge -1. So Q1 into Q2 is equal to 1 and to 1. In case of potassium iodide, we have +1 -1, 1 into 1 is equal to 1. In case of lithium fluoride, we have +1 -1, 1 into 1 make 1. In case of magnesium oxide, +2 -2, 2 into 2 make 4. So as magnesium oxide has greater charge on magnesium and greater charge on oxygen, due to high charges on magnesium and oxygen, it will have higher lattice energy. इस वजह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर आप एक दूसरे से जुदा करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सेपरेट देम फ्रॉम वन अनदर, तो इसके लिए यू नीड हाई एनर्जी. और आपको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट दैट इज़ ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ दी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. Magnesium oxide is used in the internal surface of the furnaces in which the temperature raises up to 2000 degrees centigrade. ये एक रिफ्रैक्टरी सब्सटेंस है, ये बहुत हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है इसकी लेटेस्ट एनर्जी की वजह से. क्वेश्चन नंबर 61. आप देखें, जब हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इट इंक्रीजेस. लेकिन यहाँ पर 2 एक्सेप्शन हैं. एक, जब हम सेकंड ए ग्रुप से थर्ड ए ग्रुप की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, और एक फिफ्थ ए ग्रुप से जब हम 6 ए ग्रुप की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है. Why the ionization energy of 5th A group element is higher? Because they have half filled p orbitals, और इनकी जो ऑर्बिटल है that is partially filled. आप अगर if you look at the nitrogen, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 2p3. p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो p3 इज हाफ फिल्ड. O is 2p4, this is partially filled. This one is stable configuration.
So those elements which have stable electronic configuration, they have high ionization energy. That's why the ionization energy of nitrogen will be greater than oxygen. And we have fluorine has highest ionization energy, and carbon will have the least ionization energy. So the correct order of ionization energies is D. Option number D. Question number 47. Question number 61. Question number 61 and option number D is correct. Ionization energy of fluorine is greater than nitrogen. और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन इज़ हैविंग हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन कार्बन. Question number 62. The order of electron affinity. तो ये आप देखें, हेलोजन में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है, दूसरे नंबर पर ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की है, और सबसे कम जो है वो आयोडीन की होती है. Why the fluorine has lower electron affinity? Due to its smaller size. Electron affinity किसे कहते हैं? It is the energy released when 1 mole of gaseous atom they accept 1 mole of electron and to form negatively charged ions. आप अगर इलेक्ट्रो negativities देखें of halogens, तो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन दैन ब्रोमीन दैन, लेकिन इन दोनों का ऑर्डर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. इसी तरह अगर आप बॉन्ड एनर्जीज़ देखें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी वो Cl2 की है, फिर Br2 की है, फिर फ्लोरीन की है, और इसके बाद आयोडीन की है. सो क्वेश्चन नंबर 62 में the correct option is C. Correct option is C. Chlorine is having higher electron affinity than bromine. Bromine have higher electron affinity than fluorine, and fluorine has higher electron affinity than iodine. Question number 63. अब देखें, आपने UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ी है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं तो उसके 4 अक़साम हैं. वन इज़ कॉल्ड सिग्मा टू सिग्मा स्टार, द सेकंड वन इज़ कॉल्ड N to sigma star, the third one excitation is called pi to pi star excitation, and the fourth one is N to pi star. तो ये जो N है ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है. सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके मुकाबले में, और सबसे कम एनर्जी जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर N to pi star. दिस इज़ द एनर्जी ऑर्डर for the different excitation which take place in the ultraviolet spectroscopy. Now, in what molecule sigma to sigma star excitation takes place? ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होता है. जिन मालिक्यूलों में सिग्मा बॉन्ड होते हैं बाकी कोई और बॉन्ड उसमें नहीं होता, तो उसमें सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक्साइटेशन होती है. जिन मालिक्यूल में डबल बॉन्ड हो उसमें पाई टू पाई स्टार एक्साइटेशन होगी, और जिस मालिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड भी हो और साथ कोई ऐसा एटम अटैच हो जिसमें लोन पेयर हो, इस लोन पेयर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय N. तो ऐसे मालिक्यूल में एक होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और दूसरा होगा N टू पाई स्टार ट्रांजिशन. सो दीज टू टाइप ऑफ एक्साइटेशन टेक प्लेस इन vinyl alcohol. So in question number 63 the correct option is D. और ये फार्मूला जो है इसको थोड़ा सा आप अगर करेक्ट करें, दिस इज़ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो मिसिंग है इधर, तो आप इधर एक हाइड्रोजन लिख सकते हैं, दिस वन हाइड्रोजन.
The name is of this compound is vinyl alcohol. Next question जो है, that is the question number 77. The compound which absorb largest wavelength of light. तो ये आप देखें कि मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन अगर ज़्यादा है तो ये फिर लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है. आप देखें, in case of ethene we have one double bond. In case of 1,3-butadiene we have two conjugated double bonds. In case of benzene अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में है. तो जितनी कंजुगेशन ज़्यादा होगी उतना ये फिर लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल. So the wavelength absorbed by benzene is greater than 1,3-butadiene and the wavelength absorbed by 1,3-butadiene is greater than ethene. कंजुगेशन ज़्यादा होने की वजह से दो जो एक्साइटेशन, जिन ऑर्बिटल के बीच में एक्साइटेशन होता है तो उनका एनर्जी गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से लो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन. नाउ लोअर इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, लॉन्गर विल बी द wavelength of the light which is absorbed. Question number 78. हमारे पास एक कंपाउंड है और ये दो एब्जॉर्प्शन बैंड्स देता है. 1/1700 per centimeter, this is one band, and the second band is at 3500 per centimeter. ये जो 1700 सेंटीमीटर पर बैंड देता है, दिस इज ड्यू टू द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, और ये जो पीक होता है दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोक्साइड ग्रुप. तो इस कंपाउंड में जो दो बैंड देता है, एक 3500 पर और दूसरा 1700 पर, इट मस्ट हैव टू फंक्शनल ग्रुप, दैट इज वन इज द कार्बोनाइल ग्रुप एंड द अदर वन इज OH ग्रुप. तो ये असल में एसिटिक एसिड है जिसमें दोनों ग्रुप मौजूद हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप. बाकी अगर आपके साथ हेक्सानोल हो तो उसमें सिर्फ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट विल शो एब्जॉर्प्शन एट 3500. हेक्सानोन में कीटोनिक ग्रुप है तो ये तकरीबन 1700 के ऊपर आपको पीक देगा, और एसिटिक एसिड में ये दोनों ग्रुप हैं, कार्बोनाइल भी है और OH भी. सो इट गिव्स टू peaks, one at 1700 and one at 3500. Question number 79. आप अगर एसिटिक एसिड लें, these are two molecules of acidic acid. आप अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ इसको हीट करते हैं, so these two molecules will combine. One molecule of water is lost in this process and you are left with this molecule. ये जो जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड OR, ये एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला है. So you get acid anhydride. In this particular acid, when acetic acid molecule dehydrate, we get acetic anhydride. The name of this compound is acetic anhydride. Acetic acid is called ethanoic acid, so it is also called ethanoic anhydride. Anhydride उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें एक पानी का मॉलिक्यूल कम हो, that is called anhydride. इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपके साथ नाइट्रिक एसिड हो तो इसका जो एनहाइड्राइड होगा उसका फार्मूला क्या होगा. तो two molecules of nitric acid, they on dehydration form N2O5. This N2O5 is called anhydride of nitric acid. इसी तरह H2SO4 अगर आप लें, इससे पानी का मॉलिक्यूल जुदा करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड रह जाता है. इट इज़ एनहाइड्राइड
ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड को आप अगर डिहाइड्रेट करें, so you get carbon dioxide. Carbon dioxide is called anhydride of carbonic acid. तो acetic acid जो है, it will make acetic anhydride when it undergoes dehydration reaction in the presence of a dehydrating agent, which is usually phosphorus pentaoxide. Question number 84. What is the bond order of He2 plus 1? तो आप देखें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2. I draw the molecular orbital diagram for helium molecule. 1s2 for one helium, 1s2 for another helium. When these two orbitals combine, they make one bonding. So sigma 1 is one anti-bonding, sigma star 1 is. Two electrons come here and two electrons come into anti-bonding molecular orbital. The bond order of this molecule is 2 minus 2 divided by 2 is 0. इसका मतलब है कि हीलियम के दरमियान बॉन्ड नहीं बनता और ये इनर्ट गैस है और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ये 0 के बराबर होता है. लेकिन अगर आप हीलियम प्लस 1 ले लें तो हीलियम प्लस 1 में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा. इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन हीलियम मॉलिक्यूल. इस वजह से there are 2 electrons in the bonding molecular orbital, but you are left with 1 electron in the anti-bonding molecular orbital, and bond order will be equal to 2 minus 1 divided by 2 is equal to half. So in question number 84, option number D is correct. Question number 85. Which concentration is temperature इंडिपेंडेंट? तो टेम्परेचर पर वो कंसंट्रेशन जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व हो. आप देखें W/V परसेंटेज, अगर आप देखें आपको पता है कि लिक्विड का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है. जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो W/V परसेंटेज कम होगा. आप मोलरिटी देखें, मोलरिटी इज इक्वल टू moles of solute divided by volume of solution. When you increase the temperature, temperature ज़्यादा होने से volume will also increase. जब volume increase होगा तो molarity will decrease. On the other hand, if you look at the mole friction, अगर आप mole friction देखें तो mole friction of a component is equal to number of moles of that component divided by Na plus Nb plus Nc, etc., etc. So here the volume is not involved in mole friction, and that's why molality, mole friction or molality will not depend on the temperature. So the correct option in question number 85, it is D. Mole friction does not depend on the temperature because it involves number of moles. Number of moles and mass does not depend on the temperature. Question number 86. आप अगर वाटर का देखें, वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्डेड पेयर. चूँकि सल्फर और सिलीनियम वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली से इनका ताल्लुक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह होगा. इसी तरह हाइड्रोजन सिलीनाइड का स्ट्रक्चर भी इसी तरह होगा. द रीज़न इज़ दैट ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिलीनियम, दे ऑल belong to 6A group. Such molecule will have similar shapes. Water is angular, H2S has angular shape, and H2SE has also angular shape.
Question number 94. We have 16 gram of ozone. This is O3. इसमें एटम्स हमने मालूम करने हैं. So first we find moles. Moles is equal to mass divided by molar mass. This is 16. Our molar mass of ozone is 48. So we get 1/3. 1/3 mole. अब अगर आप इसमें number of molecules of ozone देखें, so that will be equal to 1/3 mole. लेकिन अगर आप इसमें number of atoms of oxygen count करते हैं, so each molecule is triatomic. इस वजह से इसको 3 में मल्टीप्लाई करना होगा. 3 into 1/3 gives you 1. So 1 mole of ozone contains 1/3 moles of ozone contain 1/3 mole of oxygen molecule, O3 molecule, but number of atom will be 3 times larger. So we get 1/3 multiplied by 3 is equal to 1. So the correct option is question number 94. Question number 94 है. इसमें correct option जो है, that is option number A. Question number 95. आप अगर देखें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है, दैट इज इसका एटॉमिक नंबर 26 है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s2 and 3d6. इफ़ यू मेक आयरन +2, इसे 2 इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन विल बी 4s0 and 3d6. जब आप किसी ट्रांजिशन एलिमेंट को हीट देते हैं तो पहले जो है इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं, उसके बाद फिर 3d से निकलते हैं. तो Fe+2 में 4s जो है वो एम्प्टी होगा और 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब आपको पता है कि d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 1 1 1 and 1, and over here the electron is paired. So Fe+2 it contains 4 unpaired electrons. अगर आप Fe+3 ले लें, its configuration is 4s0, एक इलेक्ट्रॉन इससे और भी कम होगा, तो ये 3d5 होगा. अब चूंकि d में 5 ऑर्बिटल हैं और हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, अकॉर्डिंग टू हंड रूल 1 electron goes to each orbital. As a result, there will be 5 unpaired electrons in Fe+3. आप अगर सिल्वर देखें, सिल्वर +1, तो सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है 4s2 and 4s1 and 3d10. सिल्वर +1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s0 3d10. So all the electrons they are paired in case of silver +1 ion. कॉपर +2 में अगर आप देखें, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s1 and 3d10. कॉपर +2 is 4s0 and 3d9. तो d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1. So copper +2 has 1 unpaired electron. Iron +2 has 4 unpaired electron, and iron +3 has 5. So the correct option in question number 95 is C, that is Fe+3. It contains 5 unpaired electron and the d orbital is half filled. और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं दे आर मोर स्टेबल. इस वजह से आयरन +3 की स्टेबिलिटी इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, इट इज़ मोर स्टेबल दैन आयरन +2. ये फेरस है एंड दिस वन इज कॉल्ड फेरिक. फेरस आयरन का कलर ग्रीन होता है और फेरिक का कलर येलो या ब्राउन होता है.
This is more stable, this is less. Why it is more stable? Because if E plus 3 has half filled d orbital, और इसमें चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इट विल बी मोर पैरामैग्नेटिक. इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इफ ई प्लस 2 के मुकाबले में ज़्यादा होगा. क्वेश्चन नंबर 96, ये कलर ऑफ जिंक सल्फेट के बारे में क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ जिंक सल्फेट. आप देखें जिंक सल्फेट में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 होता है. इफ़ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ जिंक +2, इट इज़ 4s0 and 3d10. द d ऑर्बिटल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. तो जब किसी एटम या आयन में d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो वहाँ पर dd जो ट्रांजिशन होती है दैट इज़ नॉट पॉसिबल. जब dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा सो इट विल नॉट एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन, और विजिबल लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा. जब विजिबल लाइट एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करता सो दैट इज़ कलरलेस. The system or the ions are the atoms which contain completely filled d orbital. They are such compounds or such salts are actually colorless. मिसाल के तौर पर जिंक +2 को अगर आप देखें, कैडमियम +2 को, मरकरी +2, ये सारे आयन जो हैं they have d10 configuration, d10. So all these ions they will give colorless salt. Mercuric chloride, cadmium chloride, zinc chloride, all of them are colorless because in them there is no dd transition. और जिंक सल्फेट जो है इसका दूसरा नाम है वाइट विट्रियोल. जिस तरह कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज कॉल्ड ब्लू vitriol and iron sulfate is called green vitriol. Now look at question number 107. Question number 107. Chili salt peter. Peter असल में राख को कहते हैं. Salt peter means salt rock. चूँकि ये राख जो है ये चिली में पाया जाता है इस वजह से इसको चिली साल्ट पीटर कहते हैं. ये असल में सोडियम नाइट्रेट का ओर है, NaNO3. The ore or the rock of NaNO3 is called chili salt peter. ये जो पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसको कहते हैं इंडियन साल्ट पीटर. ये इंडिया में पाया जाता है. और कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 108. इसमें कहता है कि फास्फोरस ऑन रिएक्शन विद वाटर एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूसेस दिस और दिस. तो ये आप याद रखें कि थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट हैं द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब सोडियम जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू मैग्नीशियम. इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन एल्यूमिनियम. इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिलिकॉन. अब जब हम फास्फोरस पर पहुंच जाते हैं इसको P4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फ़र जो है इस 8 से हम रिप्रेजेंट करते हैं.
So they are non-reactive towards water. They don't react with water. चूँकि इनकी रिएक्टिविटी कम है, इस वजह से फास्फोरस और सल्फ़र जो है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 108 में ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. और आपने लैब में देखा होगा कि जो फास्फोरस होता है P4, इसको अंडर वाटर हम स्टोर करते हैं. इसकी वजह यह है कि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है. ऑक्सीजन के साथ इसको आग लगती है, तो इसको हम पानी में रखते हैं. इट हैज़ नो एफिनिटी फॉर वाटर. क्वेश्चन नंबर 109 ये एसिडिटी के मुतालिक है. ये देखें आपके साथ क्लोरीन के मुख्तलिफ एसिड हैं. ऑक्सी एसिड इसको कहते हैं. HClO4 है, HClO3 है, HClO2, HOCl. This is called perchloric acid. This is called chloric acid, chlorous acid and hypochlorous acid. इन सब में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन सब में एक एक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 4 हैं, इसमें 3, 2 और 1. तो बाकी एटम अगर एसिड में एक जितने हों, सिर्फ ऑक्सीजन के नंबर में फ़र्क हो, तो जिसमें ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा होगी दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड. सो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज़ दैट HClO4 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दीज ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन. Question number 114. Question number 114. Which one is a stronger base? तो आप देखें, we have iodide, we have chloride, we have hydroxide, we have C2-2. This is called carbide. आप देखें जो higher is the negative charge, higher is the negative charge on a base, stronger will be its strength. जिस बेस पर या जिस आयन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस. दस एसिटाइलाइड या कार्बाइड जो है, क्योंकि इस पर -2 चार्ज है, बाकी सब पर -1 चार्ज है, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड. ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन 114 ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. इसी तरह अगर आपके साथ एक नेगेटिवली चार्ज बेस हो और दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस. क्वेश्चन नंबर 115. ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है. फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर and there is 180-degree angle. There are 2 lone pair with 1 oxygen and 2 lone pair with the other oxygen. तो आपने पहले भी पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए हम किसी एटम का स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं. स्टेरिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम which are bonded to a particular atom and plus number of lone pairs. और ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर स्टेरिक नंबर 4 के बराबर हो सो द एटम इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अगर ये 3 के बराबर हो इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अगर ये 2 के बराबर हो then the atom is sp hybridized. Now if you calculate the steric number of carbon over here, तो आप देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम अटैच हैं, तो इसका स्टेरिक नंबर होगा 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. तो कार्बन के साथ कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 2 + 0 वी गेट 2. When the steric number is equal to 2, then the hybridization will be sp. So carbon atom in carbon dioxide is sp
hybridized. And if you look at oxygen, तो इसमें अगर आप ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर मालूम करें तो ऑक्सीजन के साथ कितने एटम अटैच हैं? 1. एक कार्बन इसके साथ अटैच है. लोन पेयर इसके साथ कितने हैं? 2. 1 + 2 = 3. तो जब स्टेरिक नंबर 3 के बराबर होगा, the hybridization state will be sp2. So in carbon dioxide molecule, carbon is sp hybridized, but both the oxygen atom are sp2 hybridized. Question number 116. Which one of the following step represents termination step? तो आपने mechanism halogenation of alkane में पढ़ा है. There are 3 steps. Initiation step, one is propagation step, and the final is the termination step. अब initiation step किसे कहते हैं? जब एक बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में मौजूद होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास, एंड वी आर लेफ्ट विद 2 free radicals. So when a covalent bond undergoes homolysis, we get the free radicals, and this process is called initiation step. इसको initiation step इस वजह से कहते हैं कि ये रिएक्शन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होता, इनिशिएट नहीं होता जब तक फ्री रेडिकल मौजूद ना हो. फ्री रेडिकल जब बन जाते हैं, एंड देन द रिएक्शन विल इनिशिएट, देन इट विल स्टार्ट. दूसरा स्टेप जो है उसको प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं. प्रोपेगेशन स्टेप में किसी मॉलिक्यूल के साथ एक फ्री रेडिकल मिल जाता है, और इस फ्री रेडिकल मिलने की वजह से we get one molecule and another free radical. तो ऐसे स्टेप को प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं कि जिसमें एक फ्री रेडिकल यूज़ हो जाता है, लेकिन उसके बदले में दूसरा फ्री रेडिकल हमें मिल जाता है. और इसी तरह जिस तरह पहले फ्री रेडिकल रिएक्शन को प्रोपेगेट कर रहा था, आगे ले जा रहा था, तो अब यही काम ये फ्री रेडिकल करेगा, एंड इट विल प्रोपेगेट द रिएक्शन. सो द स्टेप इज़ कॉल्ड प्रोपेगेशन स्टेप. और फाइनल स्टेप जो होता है उसको टर्मिनेशन स्टेप हम कहते हैं. उसमें यह होता है कि 2 फ्री रेडिकल जो हैं, फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव स्पीशीज़, तो ये 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलकर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं. जब सारे फ्री रेडिकल कंज्यूम हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स आर फिनिश्ड एंड द रिएक्शन इज आल्सो स्टॉप्ड. सो दिस इज अ टर्मिनेशन स्टेप. सिमिलरली, when CH3 methyl free radical combine with chlorine free radical, we get a stable molecule, and this is also a termination step. So in the question number 116, the correct option is C. Question number 124, which one of the following does not contain covalent bond? तो आप देखें, अगर अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला आप देखें तो इसमें अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान देयर इज़ आयोनिक बॉन्ड, लेकिन अमोनियम आयन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी है कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है. कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप देखें, so in the carbonate ion we have these covalent bonds, and there is ionic bond between calcium and carbonate. So calcium carbonate, ammonium chloride, both of them, they have ionic bond as well as covalent bond. But in case of NaCl, there is no covalent bond. All the bonds are ionic. Option number, question number 117. Option number, this is question number 124, and option number C is correct. Question number 125, ये क्रिटिकल टेम्परेचर के मुतालिक है.
Critical temperature is the temperature above which a gas cannot be converted into liquid state under any pressure. क्रिटिकल टेम्परेचर पर आप गैस से लिक्विड बना सकते हैं, इससे लो टेम्परेचर पर भी आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर आप इससे गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 10 है तो आप 10 से नीचे तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 डिग्री से अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी। At 20 degree, it cannot be converted into liquid state. 126. Kw increases with increase of temperature. It shows जब किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो टेम्परेचर ज़्यादा होने से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये होता है कि द प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में Kc जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आयनाइजेशन कांस्टेंट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। सो एज द आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, इट मीन्स आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 126, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134, which one is the sweetest sugar? So that is fructose. Among all the sugars, fructose is the sweetest one. Option number C is correct. Question number 132. Reactivity of halogen जो है, fluorine is the most reactive halogen and iodine is the least reactive halogen. 132 and option number C is correct. 133. The reactivity of alkyl halide follow the order. Iodide are more reactive than bromide, bromide are more reactive than chloride, and then fluoride. The reason is the bond between alkyl group and iodine is a weaker bond. So weaker is the bond, higher is the reactivity of the alkyl halide. Question number 141. We have 2x plus y and it makes a product. आपको mechanism given है, xy combine in the slow step make xy, and then xy combine with x and form the product. Now rate of chemical reaction depends on the slow step, which is also called rate determining step. So rate of this reaction will be equal to directly proportional to the first power of x and first power of y. So the order of reaction is 1 plus 1. It is a second order reaction. Question number 141 and option number A. Question number next. 142. Formula of calcite. कैल्साइट कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 143. इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डोमिनेंट. आपने देखा फोर्थ ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड हैं. कार्बन और सिलिकॉन में देयर इज नो इनर्ट पेयर इफेक्ट. इन तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, और जूं हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है दैट इंक्रीजेस. सो मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय लेड. ऑप्शन नंबर 143 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Question number 151.
An amine on the reaction with NaNO2 in the presence of HCl produces nitrogen gas, indicate the amine. तो ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है असल में कि नाइट्राइड जो है वो एसिड के साथ मिलकर नाइट्रस एसिड बनाता है और नाइट्रस एसिड जो है वो प्राइमरी एमाइन के साथ डाईएजो साल्ट बनाता है। इस डाईएजो साल्ट ये स्टेबल नहीं होता तो ये डिकम्पोज होकर फिर नाइट्रोजन गैस बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है या ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ फॉर द प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी amines react with the sodium nitride in presence of HCl and produce nitrogen gas. चूँकि methyl amine और aniline ये दोनों प्राइमरी एमाइन हैं इस वजह से ये दोनों नाइट्रोजन गैस बनाते हैं when they react with nitride salt in presence of HCl. So question number 1, option number D is correct. Option number D. Question number 152. Which one is the most polar bond? तो polarity depends on the electronegativity difference. इस वजह से HF में चूँकि electronegativity difference ज़्यादा है फ्लोरीन की electronegativity ज़्यादा होने की वजह से तो HF bond will be the most polar bond. Option number A is correct. 153. The correct order of reactivity is D. Alkene are more reactive as compared to alkynes. और alkyne जो हैं they are more reactive as compared to benzene. और alkane जो हैं वो सबसे less reactive हैं. Question number 161. Which one is spontaneous? तो इसमें D option correct है. Burning of coal, burning of methane, burning of petrol, burning of natural ये सारे spontaneous process हैं। एक दफ़ा जब ये start हो जाते हैं तो फिर इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस जो है ये खुद ब खुद मेल्ट होता है। So melting of ice at 10 degree centigrade or at room temperature is also an example of spontaneous process. 163. ये जो सल्फर डाइज होते हैं तो जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं दे आर कलरलेस। कलरलेस फॉर्म को हम ल्यूको फॉर्म कहते हैं। सो दे आर कलरलेस इन रिड्यूस्ड फॉर्म। 163 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 171 विच वन ऑफ द फॉलोइंग gases is ideal? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नन ऑफ द गैस इज आइडियल। ये हाइपोथेटिकल आइडिया है, प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल नहीं है। ऑल द गैसेस आर एक्चुअली रियल गैसेस। 172 द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर द according to collision theory the necessary criterion for a reaction to occur collision between the molecule, higher kinetic energy and proper orientation of the molecule. तो ये सारे कोलिजन थ्योरी के मुताबिक मालिक्यूलों के दरमियान कोलिजन का होना भी ज़रूरी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी ज़रूरी है और मालिक्यूल जो हैं उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी ज़रूरी होता है। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 173 द हेलोजन विच पोजेसेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। आपको पता है कि हेलोजन में लंडन फोर्सेस होती हैं और लंडन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब हम हेलोजन में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइजेस जो हैं दे इंक्रीज। जिस तरह साइज इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। इसी तरह इनर्ट गैसेस में डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइजेस इंक्रीज होते हैं और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
Question number 185. The brownish color of photochemical smog. स्मॉग जो है ये स्मोक और फॉग के कम्बिनेशन को कहते हैं, और फोटोकेमिकल स्मॉग का मतलब ये है कि जब ये मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूटेंट्स ये सनलाइट की मौजूदगी में ये आपस में रिएक्ट करते हैं. सो ए टाइप ऑफ स्मॉग इज़ प्रोड्यूस्ड विच इज़ कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मॉग. चूँकि इसमें ओजोन भी होता है और इसमें NO2 भी होता है, तो इस NO2 गैस की वजह से इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है, रेड ब्राउन इसका कलर होता है. बिकॉज ऑफ द NO2, द प्रेजेंस ऑफ NO2 gas makes photochemical smog appear brown. This is option number B is correct. 186. In benzene molecule there are how many double bond? तो एक्चुअली बेंजीन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता. इसकी वजह यह है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन दे आर नीदर सिंगल बॉन्ड nor they are double bond. Each carbon-carbon bond is actually 1.5 bond. It is stronger than single bond but weaker than double bond. So actually all the bonds, they are of the same length, they are of the same strength and they have the same bond order. लेकिन अगर ऑप्शन में none of these ना लिखा हो कि बेंजीन में 2 डबल बॉन्ड है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो फिर आपने 3 को टिक करना होगा. लेकिन अगर नन ऑप्शन हो तो फिर नन जो है ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है. क्वेश्चन नंबर 191. Stearinlconium hectoride is used in nail polish in order to increase its thickness. ये एक मिनरल है, स्टेरिनलकोनियम हेक्टोराइड इसको कहते हैं. हेक्टोर एक जगह का नाम है जहाँ पर इसके मिनरल्स पाए जाते हैं. तो इसकी ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं और इसमें कुछ मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम के आयंस मौजूद होते हैं. सो इट इज़ अ बिग स्ट्रक्चर. और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब आप नेल पॉलिश को रखते हैं तो कुछ वक्त के बाद इसकी थिकनेस बढ़ जाती है ड्यू टू दिस पार्टिकुलर कंपाउंड. जब आप इसको शेक करते हैं तो इसकी थिकनेस जो है वापस कम हो जाती है. तो इसको बॉटल से निकालने के लिए इसको हिलाया जाता है. जब इसको शेल्फ में रखते हैं तो फिर इसकी थिकनेस बढ़ जाती है. इसका फ़ायदा थिकनेस के ज़्यादा होने का ये होता है कि अगर ये गिर जाए तो इससे पॉलिश गिरता नहीं है बोतल से. 192. Which one of the following is a Lewis acid? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सारे all are Lewis acid. ये भी Lewis acid है, ये भी, because all of them are actually they are electron pair acceptors. Option number, this is question number 193. All of these are Lewis acid. Question number 192. A compound which does not react with filling solution. तो आपको पता है कि कीटोन जो हैं वो फिलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एरोमेटिक अल्डिहाइड होते हैं वो भी फिलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. तो 192 में ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. नीदर एसीटोन reacts with filling solution and nor benzaldehyde reacts with the filling solution. Thank you very much.